IBS रेडियो और टीवी फॉर यू के बहुत ही काबिल कद्र दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टीवी फॉर यू इटली स्टूडियो के इंचार्ज और प्रोग्राम गुफ्तगू के बहुत ही संजीदा मौज़ूआत पे प्रोग्राम लाने वाले हमारे इंतहाई काबिल कद्र दोस्त वसीम रज़ा आज फ़लस्तीन के उस एहतजाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि इटली में इस वक्त चल रहा है। तो आइए, माइक इनके हाथ में है, तो चलिए आपको वो एहतजाज ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाते हैं जो कि उनकी कारकर्दगी का एक अहम सबूत है। Islamico di Bolzano, Italia has organized this protest today in Piazza Walter Bolzano. In this protest, they want to express solidarity with Palestine. Let's come with us with TV for you, and we'll let you see what's happening here. What is the message of the protesters and what they want to ask from the Italy and from the European Union. Wasim Raza, TV for you, Bolzano, Italy. Bolzano, Italy, Piazza Walter. Oggi è tenuto una rally, una protesta per solidarietà con i palestinesi. Qui vediamo ci sono i bambini, le donne e la multietnica, tante persone, anche guardiamo qui residenti. Andiamo insieme e vediamo cosa chiedono, qual è la loro questione, cosa vogliono. Andiamo insieme e vediamo tutti i dettagli con TV for you. I am Wasim Raza, Bolzano, Italy. È un gioco di ricordo, perché chi non si ricorda, chi non ha memoria, non sa dare un significato al problema. Quindi io vorrei ricordarvi nel 30 settembre 2000, quindi stiamo parlando di quasi 20 anni fa, è stato ucciso quel ragazzo che aveva 11 anni, ragazzi, 11 anni, è stato sparato, l'hanno sparato un soldato a sangue freddo in diretta televisiva. Non so se vi ricordate questa cosa qua, però nessuno parla, nessuno si ricorda di queste cose qua. Oggi qui in manifestazione abbiamo Samir, consigliere comunale di Bolzano. Dobbiamo parlare un attimo con lui perché lui ha partecipato in questa manifestazione e chiediamo per quale motivo lui è presentato qua. Samir, qual è il motivo di questa manifestazione? Ha solo voglia di vivere in pace. Grazie tanto. Perché è una cosa terribile. Siamo contro questo che fanno gli israeliani e speriamo che fermano questo. Ma Samir, tu pensi che con questo tipo di manifestazione può aiutare? Facciamo sentire la nostra voce a questa piazza, facciamo sentire il dolore che proviamo nei confronti di questo popolo martoriato. Questo popolo che ogni giorno piange. Facciamo sentire alta la nostra voce. È fermata la guerra. Free Palestine! 10 giorni fa. Però questo più alto lo voglio sentire, perché voglio che il palestinese, quando vede il video di questa piazza, si senta orgoglioso che c'è chi difende i suoi diritti, anche se lui può andare a dormire e fregarsi, può andare al bar. Quindi voglio che lui venga a vedere questo video e sia orgoglioso di sentire Free Palestine! Quindi Free Palestine! slogan per questa manifestazione. Free Palestine! Noi siamo contro quelli che fanno che mangiano tutti i bambini, perché i bambini e i ragazzi non c'entrano niente. Bene, ma non benissimo. Loro devono vivere insieme. Perché c'è purtroppo tanta gente che sa e non vuole dire. Una parte è informarsi, diventare consapevole su cosa comprare e cosa non comprare. Per esempio, quando leggete nel codice barre, se leggete che il codice barre inizia con 729 è un problema.
conoscono i media ed è difficile per il media dire no, non sta succedendo questo, perché se lo dovessero dire calano i finanziamenti, cala la sua visione, perché ci sono tanti poteri forti dietro a questo, e quindi fate attenzione e sappiate che il cambiamento parte da voi, parte da questa sera che andrete a casa a informarvi su ciò che vi sta succedendo. A tutti per la corteggiamento. I would like to say that these are the protests can stop E sta succedendo, of the brutal police come diceva prima il fratello, la causa che ha scatenato la guerra non è cessata la guerra, e questo stato sionista illegittimo è stato anche acclamato, che bravi che hanno accettato la guerra, ma non hanno fermato ciò che la sta causando. Immaginate di vivere per centinaia di anni in una casa ereditata di famiglia in famiglia e i tribunali israeliani dicono che tu devi uscire da quella casa, devi uscire, e la gente questo non l'ha accettato, non l'ha mai accettato, però sta alzando la voce sempre di più perché ha bisogno del nostro supporto, il nostro supporto a noi che siamo lontani, a noi che possiamo andare dai nostri governi a dire dovete cambiare tutto ciò, e se noi faremo ciò i governi inizieranno ad aver paura, inizieranno ad aver paura del loro silenzio, inizieranno ad aver paura delle loro poltrone, e sappiamo quanto loro ci tengono alle loro poltrone. E quindi sappiate che tutto ciò che ha causato non è cessato, e potrebbe anche accadere che di nuovo i palestinesi reagiscano sempre in più modo forte e di nuovo ci diranno sono dei cattivi, ma loro non sono dei cattivi, loro sono gli oppressi che vengono chiamati oppressori. Jerusalem is the most important holy place for the Muslims. I cut you a minute. Last time, e vi prego di immaginare che voi abbiate un padre che viene abusato davanti ai vostri occhi, quanto vi darebbe fastidio questa cosa? Ora immaginate che queste persone, i musulmani di tutto il mondo, hanno qualcosa che è molto più importante di questo loro padre, è la loro fede. E la loro fede ritiene la moschea di Gerusalemme al-Aqsa uno dei luoghi più sacri al mondo, e i soldati israeliani hanno preso durante il mese sacro dei musulmani, il mese di Ramadan, dopo che quei musulmani hanno passato tutto il giorno a digiunare, hanno preso, sono entrati nella moschea, hanno lanciato bombe dentro la moschea, sono entrati con le loro scarpe, quando nessun musulmano oserebbe entrare con le sue scarpe a sporcare quella moschea, e loro sono entrati, hanno attaccato i palestinesi, e poi quando questi hanno reagito hanno detto ma che cattivi che sono questi. Noi Siamo una famiglia marocchina e hanno partecipato in manifestazione. Chiediamo qual è il slogan e qual è il motivo di loro partecipazione. Qual è il suo motivo di partecipazione a quella manifestazione? Il motivo che siamo venuti oggi qui, stiamo chiedendo ai nostri fratelli a Palestina che devono essere liberi come tutte le pubbliche che stanno a questo mondo, vivano bene, dormano bene, non ammazzano i bambini, che le cose che sta facendo l'Israele è veramente una cosa che ti fa male dentro il cuore, come loro, i nostri fratelli, non è solo musulmani ma anche i fratelli cristiani, anche tutte le persone che vogliono solo vivere, non chiedono un'altra cosa. Allora per questo motivo che stiamo qui oggi, stiamo chiedendo magari che questo mondo vede i nostri fratelli che è successo in Palestina. Ma questi tipi di manifestazioni pensi che si libera Palestina? Sì, come no, facciamo noi, facciamo anche gli altri, tutto il mondo che vedono che i nostri fratelli palestinesi devono essere liberi. Secondo me si cambia tante cose. Adesso c'è una guerra solo di questi giornalisti e quelli di media, bravissimo, sì. Allora possiamo cambiare tanto. Non serve più la guerra, non serve più niente, serve la parola, perché la parola non è una cosa facile, una cosa si cambia tanto. Ma vedo che governi islamici
non sono in favore, però stanno pensando di riconoscere Israele, però popolo sono in favore. Come possiamo cambiare la mentalità dei governi islamici? Non sono con i palestinesi. Dobbiamo essere, noi come musulmani dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare vedere le gente, tutto il mondo che i musulmani non sono terroristi, non sono una persona bravissima che vogliono vivere tutti insieme con calma, tante parole che non viene adesso veramente da dirci, però l'Islam è una cosa veramente bellissima, non è perché io sono musulmano, per l'Islam chiede tutti vivere normali, siamo tutti uguali. Ti ringrazio. Grazie mille a voi. गुलजानो के कारोबारी और समाजी शख्सियत अरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। इस मुजाहरे में इन्होंने शिरकत की है। इनसे पूछते हैं कि मुजाहरे में शिरकत करने का मकसद क्या है, और ख़ास तौर पे इनसे ये पूछेंगे कि सारी दुनिया के जो ख़ास तौर पे मुसलमान अवाम हैं वो तो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो फ़लस्तीन के साथ नहीं हैं। क्या इस तरह से फ़लस्तीनियों को जो आज़ादी का उनका जो ख्वाब है वो अधूरा नहीं रहेगा, और क्या ये उनका ख्वाब जिस तरह हम समझते हैं कि जितनी जल्दी 67 ईयर के बाद भी उन्हें नहीं मिला, क्या ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? फ़र्क इसमें हम पूछते हैं इरशाद अहमद साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, पॉलिसीज़ का फ़र्क होता है। इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिसी है उसने हमारा ध्यान उम्मीद से और इस्लाम से हटा के कारोबार की तरफ लगा दिया, और जब मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को ये डर होगा कि अगर हमने फलां के साथ बात ही की तो हमारी इकानमी बैठ जाएगी, तो सर डेफिनेटली यही होता है। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मुसलमान ममालिक, मुझे पिछले दिनों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फेसबुक पे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि काश के अबाबीलें आए और पत्थर फेंके। वो तो मुमकिन नहीं, और नहीं मुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मुमकिन है, और इस दफ़ा वो पत्थर हम पे बरसे चाहिए। यकीन माने मैंने मुसलमान हम इतने पीछे चले गए हैं कि वो पत्थर हम पे बरसने चाहिए। ये शायद हमारी आँखें खुले, उसके अलावा हमारी आँखें नहीं सकती। ये जो सीज़फायर हुआ इसमें आप समझते हैं कि क्या मेन मोटिव? सीज़फायर का मेन मोटिव एक तो हमास का जारियाना अंदाज़ है डेफिनेटली कि इससे पहले उनको इस तरह के डिफेंस का सामना नहीं करना पड़ा था जिस तरह का डिफेंस इस दफ़ा हमास ने किया, और सिर्फ डिफेंस नहीं किया पर पूरा नहीं किया। इससे वो एक दफ़ा खौफजदा भी हैं। दूसरा कुछ थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा कुछ हुक्मरानों ने भी किया है। क़ौम मुत्तहिदा की असम्बली में भी कुछ ऐसी बातें। आपको किस तरफ आपका इशारा है, ज़रा बात कीजिए। सर मैं इस वक्त सियासत से 2 मीटर पीछे हो गई जी, बतौर रियासत हमारा, बतौर रियासत और बतौर मुसलमान। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अच्छी बात की, और तैयब उर्दगान साहब ने भी बिल्कुल सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। वो इसी के किरदार से मुतमईन आप? ये एक तरफा है। OIC जो है ना उसका जब एक एजेंडा ही नहीं है तो उसके किरदार से कैसे? अच्छा, उसके एजेंडे में इतला। ठीक है। ये जो लोग बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन हम तोफ़ो कर रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद होगी, आपका पैगाम क्या है? क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपके शोले मज़ीद भी किसी वक्त भड़क सकते हैं, तो लोगों को जगाने के लिए जो एक रद्द-ए-अमल उनके अंदर है वो उसके हवाले से आप क्या करेंगे? असल में ये जो आज का प्रोग्राम था इसको बड़े भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और इसमें बहुत बड़ा होना था। शायद आपके इल्म में है या नहीं, जो रात गुजरी है कल रात को कस्तूरे वालों ने एक नया लेटर उसमें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, उधर मेरे पास पड़ा भी है। इतनी शिकें उन्होंने डाली हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप नारे नहीं लगा सकते, आप जुलूस को लेके आगे नहीं चल सकते। ये जो 2-3 प्रोटेस्ट पहले हुए हैं ना बरसानों, उसकी मद्देनज़र उनको पता था कि ये मज़ीद ऑर्गेनाइज होकर आ रहा है, तो ये रियली बहुत था। और सिर्फ इस वजह से वो कल रात को ही जो काफ़ी सारे लोग थे उनको पता चल गया था कि कस्तूरे ने इस पर हद बन दिया। इसके बावजूद जो फ़लस्तीन से मोहब्बत रखते हैं और उनका नज़रिया वो मौजूद है, वो हर जगह जाएंगे। फ़लस्तीन से मोहब्बत करने वाले, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करने वाले, हमारा वो पहला क़िबला है। सर इससे ज़्यादा भी पाबंदियाँ लगें, हमने जाना ही जाना है, कोई माई का लाभ नहीं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच टॉकिंग फॉर TV for you। थैंक यू सर।
Noi siamo qua. Non siamo forze così organizzate. Abbiamo capito. Perché noi siamo persone che non fa questo. भी हमारे साथ है, टीवी फॉर यू से बात करेंगे। अच्छा, फलस्तीन आज़ाद होगा नहीं होगा? पाकिस्तान की फौज इटालियन हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। इटली को, यूरोप को, यूरोप अंदर अंदर आजकल बहुत फर्क पै गया। यूरोप और पहली गल नहीं रही, आज दुनिया बदल गई। सैयद मुदस्सर हुसैन बुखारी नाज़म मिनहाजुल कुरान बुल्ज़ानो आज के इस मैनिफेस्टेशन में जो बुल्ज़ानो के प्यासा वाल्टर इटली में हो रहा है उसमें मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये जो मुज़ाहरों का सिलसिला सारी दुनिया में हुआ, आज बुल्ज़ानो में भी हुआ, इन मुज़ाहरों से फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली जहारियत को रोकने में कोई मदद मिलेगी? हम अपनी जगह से जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं इटली बहैसियत मुसलमान, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम लोगों को एहतजाज करने के लिए सिर्फ यही प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम कर सकते हैं। वहाँ पे जाके लड़ नहीं सकते या हम उस सारे सिलसिले को लड़ाई से रोक नहीं सकते। सिर्फ हम प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं और उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमें भरपूर शिरकत करनी चाहिए, हम सबको यहाँ पे आके बताना चाहिए, मैसेज देना चाहिए कि हम उनकी तकलीफ़ में, उनके दुख में उनके साथ शरीक हैं। जो हम तस्वीरें, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे जहरियत हो रही है, उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहिए। हम अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में बैठ के तकलीफ़ का इजहार करते हैं और हम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे इख्तियार में सिर्फ ये है कि हम दुआ के साथ साथ इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका हिस्सा बने और यकजहती का इजहार करें कि हम हर तकलीफ़ में मुसलमानों के साथ खड़े हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो ऐसा प्रोटेस्ट, उसमें हमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, मुज़ाहरों और प्रोटेस्ट के साथ साथ डिप्लोमेटिक सतह पर आप समझते हैं कि अगर इसराइल की जहारियत के ख़िलाफ़ यूरोप से या इटली से, इस तरह के ताकतवर ममालिक से जिनका असर सूख भी है, एक ज़ोरदार आवाज़ आए तो शायद इसराइल मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए? देखें, यूरोपियन यूनियन का सारे मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा दखल है। इसकी वजह से हम लोगों को उनको इजहार करना चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें और इसको रोकें और इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो जालिम हो रहे हैं उसको रोका जाए हर सूरत में और जल्द से जल्द। इसके लिए बेहतर ये है हमारे पास कि पुरअमन एहतजाज किया जाए और इजहार किया जाए यकजहती का और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई। आपका पैगाम क्या है आज के इस मुजाहरे में? मेरा पैगाम यही है कि सब हम तकलीफ़ में हैं, हम उनकी जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे ज़ाहिर है हर कोई तकलीफ़ में है। जैसे वो कश्मीर का मसला है, इसी तरह फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए अहमियत रखता है। उसको जो है वो होना चाहिए पुरअमन तरीके से एहतजाज की सूरत में, ताकि ये लोग की आवाज़ उठाएं कि हाँ जी, मुसलमान जो हैं वो तकलीफ़ में है और उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, इस ज़्यादती को ख़त्म किया जाए। Qui abbiamo una signora che ha partecipato a questa manifestazione. Chiediamo qual è il slogan della sua partecipazione. Cosa lei dice il senso della partecipazione di questa protesta? Ovviamente Palestina libera, siamo qua per questo, siamo qua per ripeterlo a tutto volume affinché più persone io veramente non ho preparato nessun ovviamente lì tutto ciò che sto dicendo lo sto dicendo dal mio cuore, dalle nostre perché manifestazioni, però vogliamo mandare
un giorno bisogna continuare voglio a vedere ripetere il ciò che è mondo giusto. più giusto, perché Finché le persone l'America, che stanno facendo degli sbagli, che stanno commettendo degli omicidi, l'Occidente Stato, e anche i paesi arabi sentono la coscienza sporca, perché il mondo deve parlano vedere che tanto loro di hanno la giustizia, coscienza di sporca, ed è quello uguaglianza, che di rispondono libertà, anche con così ma in verità tanta non è forza. così. Loro devono Tutti, sentire che il mondo tutte sta queste alla cose verità, sono e per quello solamente delle continuiamo a menzioni ripetere che la Palestina che è ci hanno libera, continuato anche a se mille raccontare, persone a moriranno a raccontare, a prescindere dalle nostre raccontare. azioni. E io Però sono veramente dobbiamo stufo. ripeterlo, Oggi dobbiamo ripeterlo sono perché è l'unico modo orgoglioso di perché vedo una generazione carica, Parte una della generazione che ha questo tipo di voglia proteste, lei di pensa combattere che ci per la serve causa anche una voce palestinese, forte, ma non parte solamente, per dell'Italia, tutte parte le cause dell'Europa? che oggi vivono un'ingiustizia da governi anche perché e da persone che vogliono lì è uno contro il uno, è potere. difficile, fra l'altro è una situazione di forte squilibrio, è ridicolo che il mondo non stia Ed è- intervenendo, e dato che c'è Ed è tantissimo veramente squilibrio quello dalla parte del io sono sionismo, è importante che noi cerchiamo di riportare la palla al perciò centro questo che come sto dicendo per è dare dal la mio possibilità ai cuore palestinesi, e soprattutto non hanno bisogno voglio non che hanno bisogno che noi stiamo qui a urlare e a squarciagola, però essendo che il mondo pende dalla parte del sionismo, dico c'è l'ultima bisogno che cosa, noi riportiamo la palla al centro, che siano i palestinesi stessi a farsi il gol. Vi ringrazio. i palestinesi in realtà Bolzano Italia, qui abbiamo Yahya Hammam. Parliamo un attimo la vera cosa di conflitto tra Israele e Palestina e come sarà risolto in futuro. Yahya? Sì, innanzitutto io non lo chiamo conflitto israeliano-palestinese, io lo chiamo l'aggressione israeliana al popolo palestinese. Ma il conflitto oramai purtroppo sappiamo che ci sono molti interessi, la questione non riguarda soltanto i palestinesi Mi stessi. dispiace perché il media globale presenta così la situazione, però è vero che Beh, la media globale, ormai questo è l'imbroglio delle mass media in generale, soprattutto qui in Occidente, negli Stati Uniti d'America, in alcuni anche paesi arabi purtroppo. Però la verità è l'aggressione dello Stato, se vogliamo chiamarlo uno Stato, israeliano verso il popolo palestinese. D'altronde che viene chiamato l'unico paese democratico, ma un paese assassino anche purtroppo e criminale. La questione palestinese non può essere risolta in queste maniere, soltanto rispettando i diritti dei palestinesi. Così viene risolta. ma alcuni paesi specialmente stanno riconoscendo Israele, dice che questo può rovinare lo stato presente del paese. Ma questo rovina solo quegli stati stessi, sì, perché stanno andando contro la volontà dei loro popoli stessi. Se voi andate a fare un sondaggio, ma non solo anche in mezzo ai popoli arabi e musulmani, ma anche in mezzo alla popolazione europea, oramai perché la popolazione non accetta l'ingiustizia, questa è la verità. Ho visto che questa volta le manifestazioni a livello globale hanno proprio aiutato a fare cesta di fuoco o solo aggressioni, l'attacco proprio forte da Hamas? Qual è il proprio motivo che hanno citato subito la cesta? Ma io li dividerei in due punti fondamentali. La forza di Hamas ha fatto veramente un ruolo importantissimo e ha cambiato di carte. Poi logicamente la pressione della popolazione quindi ha messo in crisi i loro governi. Fino a ieri i governi sentivamo sempre una voce sola: Israele ha il diritto di difendersi. Oggi è cominciata leggermente a cambiarsi questa voce, ma è ancora molto timida. Abbiamo bisogno, cioè il cammino è ancora molto lungo, dobbiamo essere molto forti. Ma una voce forte deve essere da tutto a livello diplomatico, ma ci vuole la pressione dei popoli liberi, degli uomini, che devono continuare a fare pressione su chi vuole una vita normale come tutti gli altri. Diciamo manifestazione poi di Stato, Ma tra i come vedi l'importanza di Ma io la questione dei due stati io non ci credo.
non ci credo, secondo me è stata una grande bugia e dall'accordo di Oslo fino ad oggigiorno ci hanno sempre preso in giro e Israele ha preso ancora più tempo per sottrarre il terreno, le case, basta guardare la cartina geografica oggi come è messa dopo l'accordo di Oslo. Io dico, se non si rispettano i diritti dei palestinesi, questo non sarà mai risolto, i conflitti saranno ancora più forti e le guerre che vedremo domani saranno ancora più forti. Qual è il messaggio di slogan, il messaggio di manifestazione di oggi? Ma il messaggio di oggi praticamente basta, bisognerebbe dare il sostegno ai nostri fratelli palestinesi, basta l'assassinio. Basta l'olocausto del 2021 dei popoli palestinesi. Grazie per dare contributo. Grazie, molto gentile. Così tanto ingiusta e permetterglielo. Cioè questo, come hanno detto prima, potrebbe significare che un domani potrebbero farlo qui e noi lo permetteremo? Certo che no. E allora perché viene permesso una cosa del genere? È condannabile al massimo e io condanno come stavo dicendo, il mondo la cosa che vende le armi. E purtroppo dai media tradizionali è sempre stato trasmesso come se fosse una questione di conflitto, una guerra eterna, gente che combatte da secoli e da secoli. Quindi deve essere una questa è solo parte dell'Europa, parte delle non è l'interpretazione giusta della cosa, perché se andate ad analizzare la storia, quello che consiglio di farvi, consiglio soprattutto di andare ad informare da quelli che sono, per esempio c'è un uomo che si chiama Monio Badia che ha fatto delle interviste molto interessanti e che ha discusso nel dettaglio quello che è successo in quella zona da diversi anni e di come lo Stato sionista usi i media tradizionali per darci l'idea che quello che sta facendo è giustificabile. Ma ditemi voi, è giustificabile uccidere 60 bambini? È giustificabile? Vuol dire che non finirà questa guerra palestinese? Proprio non riesco a capire per quale motivo uno Stato potrebbe essere autorizzato a prendere uno Stato altrui e accusare la vittima di essere l'oppressore. Vi rendete conto che è qualcosa che non ha senso e non avrà mai senso? Delle persone che perdono un bambino, se il bambino fosse nostro, vuol dire che saremmo stati zitti anche quando succedeva quello che era il genocidio degli ebrei. Qualcosa perlomeno, però ormai le persone saremmo rimasti zitti durante l'apartheid sudafricano, ma noi oggi no, stiamo dimostrando che no, così come vediamo che quello era ingiusto, questa tecnologia ha portato di avere poco contatto con la realtà. Perché sentire che dall'altra parte del mondo muoiono bambini pensano che sia un film, invece allora, se tu lo vedi con i tuoi occhi tu mi dicevo prima, ti tocchi con le tue mani, andare ad analizzare tutto quello che è l'analisi storiografica di tutto quello che è successo. Quindi questi però noi perché siamo al fianco dei palestinesi? Qualcuno mi sa dire perché proprio siamo al fianco dei palestinesi? Secondo perché me sono gli oppressi, perché sono le vittime. Sensibilizzare le persone è ovvio che stai al fianco di chi creare gruppo. Perché purtroppo i media ci stanno facendo sembrare davvero che sia una situazione di scontro, una guerra. Però Israele contro Hamas, cose così. Ringrazio parlare con dove ci troviamo? Cioè, non riesco a credere che quello che succede Bolzano a Gaza è un ghetto e che cui stanno 2 milioni di persone. 2 milioni di persone che vengono bombardate आने का मकसद पूछते हैं और उनसे कुछ संजीदा सवाल भी करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और bombardano आने का मकसद क्या है? che vogliono distruggere la memoria storica del popolo palestinese. La memoria storica, hanno tentato in tutti i modi di distruggerla, distruggendo i villaggi palestinesi e facendo dei patti così una buona parte degli israeliani è convinta che lui non ci fosse nessuno, che quello era uno spazio vuoto e che cavolo i palestinesi sono stati un po' in giro. L'altro giorno
اور بات یہ ہے کہ اگر ہم اکثر کہتے ہیں، اکثر لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے جو واقعات ہوئے آج آپ اس پہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر اس کا یہ فائدہ یہ جو آج آپ کو ہم لوگ ادھر اکٹھے ہیں، اگر میں امام حسین کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے مجالس میں جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر امام حسین کی کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مظلوم کی آواز بننا ہمارا کام۔ تو اس وقت موجودہ وقت میں جس موقع پہ جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں میں اور آپ 2021 میں، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم کون ہے جس کے اوپر ظلم ہو؟ وہ یا کشمیر یا فلسطین۔ تو اگر میں امام حسین کی مجالس میں بھی بیٹھوں، امام حسین کو روں بھی، لیکن جو موجودہ دور کا مظلوم ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہ کروں تو میری وہ ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں ہے۔ اچھا، اس طرح کے مینیفیسٹیشن جو ہوتے ہیں اس میں ہم اظہار یکجہتی کے لیے شامل ہوتے ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ سر حدیث شریف تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ برائی کے خلاف لڑو، تین طرح سے لڑو۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو زور سے لڑو، برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے روکو، بول کے ظالم کو کہو کہ رک جا، ظلم نہ کر۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے دل میں اس ظلم کو آپ برا چاہیں۔ تو سر ہم اگر ہمیں یہ اللہ پاک توفیق دے ہم جسمانی طور پہ بھی مظلوموں کے کام آئیں، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ اس طرح کے مینیفیسٹیشن برپا کر کے تو ہم کم از کم ضمیر انسانی کے اوپر ایک دستک تو دے رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کم از کم تاریخ ہمیں یہ تو کہے کہ کل کو وسیم اور عباس اور مدثر کے بچے یہ تو کہیں گے کہ یار ہمارے بڑے مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اور اگر آج ہم ان مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، گھر میں بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں، تو کسی کو کیا پتا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم۔ تو مظلوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا میری نظر میں بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، اور اس سے مظلوم کو ضرور ہمارے کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ حماس نے اگریسولی اٹیک کیا اسرائیل پہ، جس کے نتیجے میں اس کو جنگ بندی کے لیے راضی ہونا پڑا۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں جب دیش باہر نکلا مسلمان دوسرے لوگ اس سے جو ایک امپیکٹ بنا، اس کا بھی اثر ہوا کہ یہ جنگ بندی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اس دور میں یہ جو مظاہرے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے؟ سر جیسے میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں فوجی طاقت کے حوالے سے، چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے وہ حماس ہو، ان دونوں قوتوں کو ہمارا سلام ہے جو ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جسمانی طور پہ ان کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ لیکن سر آپ اگر کمپیریزن دیکھیں، آپ اگر طاقت کا توازن دیکھیں تو کیا یہ حماس اور حزب اللہ یہ تنہا اسرائیل جیسی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ اسے نہیں مجبور کر سکتے ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے۔ بے شک اس کے لیے تھوڑا نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ یہ جذبہ ایمانی ہے ہمارا۔ لیکن سر یہ آواز جو سول لوگوں کی جو آواز ہے، جو عام لوگوں کی آواز ہے، اور اس میں آپ نے بڑا خوب کہا کہ صرف مسلمان نہیں، لیکن آپ کو جیسے ہم کہا کرتے ہیں نا کہ امام حسین کا غم منانے کے لیے آپ کو شیعہ سنی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو انسان، آپ کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح فلسطین اور کشمیر اور یار کوئی بھی مظلوم ہے، سر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو اس مذہب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس فرقے کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا اور آپ کا ضمیر زندہ ہونا۔ پوری دنیا میں جن کے ضمیر زندہ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں، اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم تو کہہ جاتے ہیں نا جنرلی اجتماعی طور پہ یہودی، ہمیں یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ابھی بہت سارے یہودی جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسٹیٹ آف اسرائیل کرنا چاہیے۔ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے لیے یہ سارا ظلم کر رہی ہے، یہ اس کو ہم کسی ایک مذہب کے اوپر تھوپ نہیں سکتے کہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان۔ اسٹیٹ آف اسرائیل کا آپ نے نام لیا، تو اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے بعض عرب ممالک کو کنونس کر چکی ہے، بحرین ہے، پھر یونائیٹڈ ایمریٹس ہے، پھر اس کے بعد ہم سوڈان اور موروکو کا بھی نام سنتے ہیں، تو وہ اپنے پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں۔ فلسطینیوں کے پاس سر آپ نے بالکل صحیح پن پوائنٹ کیا، لیکن آپ ایک بہت بڑے ملک کا نام بھول گئے، سعودی عربیہ، جو مسلمانوں کا قبلہ اور کعبہ ہے۔
वो तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे वहाँ पे हमारा किबला और काबा है, तो उनकी तरफ जो उनका अमल होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हसास है मुसलमानों के लिए। और यूएई और ये सारे सर बिलाशुबा देखें तारीख में जाते हुए आप देखें कि यूनान में मौजूदा यूनान उन्होंने एक मुकदमा चलाया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया था। फिर उन्होंने हेयरिंग की, पूरा मुकदमा चलाया, मुकदमे के बाद उन्होंने सुकरात को बरी किया और जिन लोगों ने उसको मजबूर किया था उनको कन्विक्ट किया, उनको मुजरम गर्दाना, उनको सजाएं सुनाई। अब देखें हज़ारों साल बाद, ये कबल मसीह की बात है, हज़ारों साल बाद किसी ने पूछा कि ये यूजलेस एक एक्सरसाइज आपने की है, फ़र्क क्या पड़ेगा, ना तो सुकरात वापस आएगा ना वो जालिम। सर उन्होंने यही कहा कि देखें इससे ये तो पता चलेगा कि हम सही के साथ, हम मजलूम के साथ, हम जालिम के साथ नहीं, हम गलत के साथ नहीं। तो सर जब आप थोड़ा सा साथ एक जालिम का देते हैं तो उससे डेफिनेटली मजलूम के काज को बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये तो मतलब जैसे हम पहले कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों की तो काज नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे जिसके मुसलमान का पूरी कौम जो एक जिस्म की मानंद है, एक हिस्से को दर्द हो सकता कहाँ है आज वो फीलिंग, वो एहसास आज कहाँ। तो फिर हम सिर्फ ज़ुबान से मुसलमान होने के दावे मैं समझता हूँ कि उनके ये खालिस्तन अपने ज़ाती मफादात, उनके ये मादी मफादात हैं, बाकी और कोई बात। अवामी सतह से तो आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से तो उम्मीद नहीं है, इस्लामिक कौंसिल में वो हमेशा भी तो करते हैं वो करार। तो इटली है, यूरोप है, उनकी तरफ से आप समझते हैं एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ इंसानी बुनियादों पर। सर मैं ये समझता हूँ कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो दुनिया जो बाईपोलर दुनिया थी, जो सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और रूस के दरमियान में बढ़ी हुई थी, वो तो ख़त्म हो गया। यूनिपोलर दुनिया रही कुछ साल पहले तक। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब चूँकि फ़ौजी तौर पे तो ये ना यूनिपोलर है, ना बाईपोलर है, ना मल्टीपोलर है, लेकिन इसमें ये है कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा, यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे अफसोस होता है यूरोप के लोगों के ज़मीन के ऊपर मुझे इत्मीनान है। जो इंडिविजुअल लोग हैं, मैं हर आदमी से जिससे भी मेरी बात होती है और आपकी भी होती होगी, वो लोग इनफरादी तौर पे इसराइल के मज़ालम की हमेशा मजम्मत करते हैं और फ़लस्तीनियों के साथ यकजाती का इज़हार करते हैं। लेकिन ना तो इनकी हुकूमतें और ना यूरोपीय यूनियन मेरे ख्याल में वो कुछ नहीं किया जो ये कर सकते थे, जिसकी ये इस्तेदाद रखते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, तुर्की को, ईरान को, दूसरे मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि ये डिप्लोमेटिकली, चूँकि हम तो बहुत कर अभी एक स्टांस Nella recente aggressione alla Palestina ci sono stati circa 1900 feriti, circa 254 morti, di cui 67 bambini, dei 66 bambini, 11 di loro soffrivano di disturbi mentali, malattie dovuti all'arrivo dei missili. Immaginate al loro posto, prendendo la tua terra, uccidendo i tuoi figli, insultando le tue donne, e tu sei ucciso, arrestato vivo in mezzo agli insulti. Poi distorgono la tua immagine e ti accusano di terrorismo. Siete tutti tristi adesso, ma quello che non sapete è che siamo tutti complici di questo crimine. Vi paghiamo per comprare armi, per uccidere i palestinesi, siamo noi che vi aiutiamo nel genocidio. Perché acquistiamo della società che finanziano Israele? Tu sei davvero solidale della Palestina, ma la sola simpatia non basta, e le parole da sole non bastano. Stai davvero cercando di aiutare la Palestina a boicottare तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये एक पॉपुलर डिसीजन भी है और एक ये ज़रूरी डिसीजन भी है और एक राइट डिसीजन भी है। लेकिन पाकिस्तान में कोई हुकूमत भी इसराइल को तस्लीम करके मेरे ज़ाती ख्याल में पाकिस्तान में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और जिस सियासी जमात के दौर में ये काम हुआ वो पाकिस्तान में तो अपना मुस्तकबिल ख़त्म समझा, क्योंकि पाकिस्तान दिल फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तानियों का एक जज्बाती लगाव है। अब देखें दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क, कितने मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल।
देखें पाकिस्तान का तो उसके साथ एक और सतह पे भी जो है ना वो मुकाबला है कि जैसे दुनिया कहती है कि वो अगर मज़हब के नाम पे दुनिया में सिर्फ दो स्टेट्स जो हैं रियासतें बनी, एक इसराइल है जो यहूदी है जूइज़म के नाम पे बनी, और पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे बनी। तो अगर इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क उस देखें इसराइल अगर फ़लस्तीनियों के हक दे देता है, अगर उनके साथ जुल्म नहीं करता, मैं ज़ाती तौर पे मैं अमन का दाई हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस हक में हूँ कि पूरी दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और हर मज़हब को हर अक़लियत को जीने का हक होना चाहिए, वो किसी भी मज़हब से उसको जो भी ख्यालात हैं। और यही हमारे दस्तूर में भी है, हमारे कायद ने भी यही कहा। पहली तकरीर में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा था कि आज से रियासत का आपके मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहे मसाजिद में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चाहे गिरजे में जाएं, ये आपका अपना और आप आज़ाद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। इस सदी में इतनी जब जदीद हो गए हम, जब इंसान आसमानों पे कमंद डाल रहे, जब इंसान चाँद और मरीज़ को मुसफ़र कर, तो अभी तक हम ज़मीन के मसाइल से बाहर नहीं हैं। अच्छा बात साहब, आज के इस मुजाहरे में बिलखसूस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आपका क्या पता? जी मैं माजूद था तो कट ऑफ करने में देखता हूँ कि पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत हैं। मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तानियों की शमूलियत को बहुत ज़्यादा देख रहा था। आपने ये स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, आपकी तरफ से ही हमें ये दावत मिली, फिर मुदस्सर शाह साहब की तरफ से दावत मिली। मैंने बहुत दोस्तों को दावत दी, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि कल को ये आग फिर भड़क उठे। इस तरह का कोई फिर स्टैंस होता है, एडवेंचर होता है इसराइल की तरफ से, तो आप समझते हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए? सर हमें ये नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी हुकूमतें उस वक्त एक्टिव हों जब इसराइल इस तरह की कोई कार्रवाई करे। देखिए हमें हर आदमी को अपनी सतह पे काम करने की, देखिए अगर हम अपने लोगों को आज मोटिवेट करके facciamo sentire la nostra voce nuovamente तो आप क्या समझते हैं e facciamola sentire a chi sta passeggiando per questa piazza che vede solo delle bandiere sventolare ma non sa perché siamo qua, non sa che noi siamo qua per il genocidio e non è un'esagerazione che sta accadendo oggi nella terra palestinese, un omicidio, un genocidio per mano di uno Stato sionista che dice che là perché è un suo diritto. E io dico, se tu per una terra devi attaccare, devi lanciare bombe, forse quella terra non è tua, ma forse, eppure queste persone attaccano, criticano, abusano e poi ci vengono a dire che i palestinesi sono oppressori. A queste persone che stanno passando invito ad andare a cercare cosa sta facendo lo Stato illegittimo di Israele a queste povere persone che non hanno niente. तो इस्लामी को बुलजानों की तरफ से आज फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो मुजाहरा हुआ उसमें वसीम खालक साहब भी मौजूद हैं, बुलजानों में होते हैं। इनका एक हवाला और भी है कम्युनिटी के अंदर, लेकिन कम्युनिटी के फ़र्द के हवाले से हम इनसे आज TV4U के लिए गुफ्तगू करेंगे। हम इनसे पूछना ये चाहेंगे, इन्होंने इससे पहले एक बड़ी मुतासर इंग्लिश में तकरीर भी की, उसमें इन्होंने क्या पैगाम दिया? हम यहाँ बुलजानों में फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए और मैंने जो पैगाम दिया वो ये पैगाम दिया कि जो इतनी सुपर पावर वगैरह है वो फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रही। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जो फ़लस्तीन पर काबिज़ है और उसमें बच्चों को, लोगों को और औरतों को शहीद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, वो एक आज़ाद रियासत है और इसराइल के दहशतगर्द मुल्क जो फ़लस्तीन पर काबिज़ है उसको के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इस्लामिक कौंसिल से हमारी ये अपील है और ये कौमी मुत्तहिदा के इदारों से कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और कोई राय अमल तैयार किया जाए। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं सारी दुनिया में, इसका कोई असर होता है जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान उसको कम करने के लिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इसका तो कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि इस तरह पूरी दुनिया में हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में देख लें, यूरोप में देख लें, जैसे आयरलैंड में कुछ दिन पहले उनने अपनी कौंसलेट में ये असम्बली में अपना ये बिल पेश किया कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। यूरोप में ये पहला मुल्क है जिसने इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया है। इसका क्यों नहीं असर पड़ता? इसका बहुत
बहुत असर पड़ता है। इस तरह पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है और ये फ़लस्तीन पर काबू होने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को ये मार कर भगा रहे हैं और वहाँ अपनी आबादकारी कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत राय अमल है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए। फ़लस्तीन में यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हमारा पहला खाना काबा है, तो इसके लिए हम ज़रूर जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इज़हार यकजहती के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। अच्छा, ये जो कुछ अरब ममालिक है जिसमें बहरीन शामिल है, फिर अरब अमारात है, सऊदी अरब का भी इस्लाम में देखा कुछ हुआ है, वो उनको इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, कुछ करने जा रहा है, जिसमें मोरक्को भी इस्लाम वगैरह भी शामिल है। पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि कायद-ए-आज़म का हवाला देते हुए स्टेट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत की नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि अगर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत इसराइल तस्लीम करने बना दे, आज़ादी उनको दे दे, तो फिर हम सोच सकते हैं कि इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान का ये जो स्टैंड है उसके बारे में आपको क्या है? देखिए जी, सबसे पहले कि जब पाकिस्तान बना हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर सकता हम इसको एक मुल्क तस्लीम नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए जब तक इसराइल हमारे फ़लस्तीन भाइयों को आज़ाद नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट या हमारे अदारे फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क इसराइल को एक मुल्क तस्लीम करेंगे। आज के इस मुजाहरे में आपने क्या पैगाम दिया है? आज के इस मुजाहरे में मैंने यही कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो सुपर पावर्स हैं उनको चाहिए कि सब मिलकर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करें और उन्हें बताएं कि फ़लस्तीन एक आज़ाद मुल्क है और उसे आज़ाद किया जाए और उस पर ये जो दहशतगर्दी कर रही है, जो बमबारी की जा रही है, इसे रोका जाए। वसीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग TV4U बुल्सानो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।